So last class we have seen file handling. Using file handling, what we file handling का use करके आप तो file class is there. That class is file, get new file और existing file rename करना, delete करना, folder create करना, delete करना, उस particular file की permission सेट करना, फाइल की लेंथ चेक करना, उसका पाथ चेक करना, देन उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी. देन आल्सो आई टॉक्ड अबाउट व्हाट इज स्ट्रीम, होता क्या है. सो स्ट्रीम इज जस्ट अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द सोर्स और डेस्टिनेशन. अभी डेटा कुछ ट्रांसफर करना है तो यू नीड सम काइंड ऑफ मीडियम और चैनल वेयर यू विल ट्रांसफर द. आपके पास एक तो डेटा रीड कर सकते. So based on the content of the stream, we have two types of character-oriented streams, and another one is byte-oriented. So character-oriented streams carry the characters, and byte-oriented streams carry the bytes. Again, वहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपको बाइट्स में डेटा ट्रांसफर करना है, रीड करना है, राइट, दो ही ऑप्शन है. रीड करना है या राइट करना है. रीड मतलब फाइल में से डेटा कुछ रीड करना है और उसे यूज करना है प्रोग्राम में. दूसरा है प्रोग्राम में जो भी डेटा जनरेट होता है उसे आप फाइल में स्टोर करना चाहते हो, राइट करना. दैट इज टू ऑप्शंस वी हैव, रीड एंड राइट. So you want to read bytes, then we have these many set of classes. You want to write bytes, then we have these many set of classes. You want to read characters, we have these two classes. You want to write characters, we have these two. तो फाइल में से डेटा रीड करना है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, वी हैव थ्री क्लासेस. फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम. दूसरा है फाइल में डेटा राइट करना है बाइट्स में, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट. सिमिलरली कैरेक्टर हमें रीड करना है तो हमारे पास फाइल रीडर है और बफर्ड रीडर है. यू वांट टू राइट कैरेक्टर्स टू फाइल, वी हैव फाइल राइटर एंड बफर्ड राइटर. अभी बफर्ड और डायरेक्ट फाइल में राइटिंग का हमने डिफरेंस भी देखा था. अभी फाइल में से आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो रीड करना और राइट करना. तो रीड आप कैरेक्टर्स कर सकते हो या बाइट्स रीड कर सकते हो. कैरेक्टर रीड करने के लिए आपके पास दो क्लासेस है, फाइल रीडर और बफर्ड रीडर. यू वांट टू रीड बाइट्स फ्रॉम द फाइल, वी हैव फाइल इनपुट स्ट्रीम, और दूसरा है बफर्ड इनपुट, वी हैव फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड इनपुट. वैसे ही कैरेक्टर राइट करने के लिए आपके पास फाइल राइटर है और दूसरा बफर्ड राइटर है. सिमिलरली यू वांट टू राइट बाइट्स, देन वी हैव फाइल आउटपुट स्ट्रीम और दूसरा है बफर्ड आउटपुट. तो रीड राइट ऑपरेशन मैंने आपको समझाया था कि अगर आप कोई बफर कॉन्सेप्ट, अगर आप डायरेक्टली, मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी समझाया था कि लेट से मुझे कोई भी फाइल में से कुछ रीड करना है, राइट करना है, हर एक बाइट या हर एक कैरेक्टर को क्या होता है, फाइल का परमिशन. एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लेट से आप कोई मॉल में जाते, दिन में 1000 चक्कर हो रही है आपकी, आप चक्कर लगा रहे हो मॉल में, हर बार सिक्योरिटी आपको चेक कर रहा है, तो 1000 बार आपका परमिशन, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो. तो उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते, एक ही बार परमिशन चेक करो एंड यू आर गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम. यहाँ पर भी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डायरेक्टली फ्रॉम फाइल, वी यूज सम टेम्पररी called as buffer. So buffer is nothing but temporary storage, and we first of all store the data in the buffer for reading purpose as well as writing. Then in one shot we write or we read from the file. तो रीड ऑपरेशन मैंने आपको समझाया था. अगर आपको फाइल में से डेटा रीड करना है, फाइल में से डेटा रीड करना है, ये रीड ऑपरेशन. अभी रीड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो कैरेक्टर्स रीड कर सकते हो या दूसरा बाइट्स. कैरेक्टर रीड करना है तो आपके पास है फाइल रीडर, आपको बाइट्स रीड करना है तो आपके पास है फाइल इनपुट स्ट्रीम. सिमिलरली अभी आप यू वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, बट वहां पर अभी डायरेक्टली फाइल में से नहीं करना, आपको बफर यूज करना. तो वी हैव दिस बफर, बफर कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो. तो बफर आपके पास दो टाइप के होंगे, एक बफर विच विल स्टोर बाइट्स और एक बफर विच विल स्टोर कैरेक्टर्स. तो बफर, आप बफर में से कुछ डेटा रीड करना चाहते हो, दैट इज बाइट्स, देन वी यूज दिस क्लास कॉल्ड एज बफर्ड इनपुट स्ट्रीम. और कैरेक्टर रीड करना है तो व्हाट इज द क्लास, वी हैव बफर्ड
सिमिलरली यहाँ पर राइट ऑपरेशन मैंने आपको समझाया था, राइट ऑपरेशन में भी यहाँ पर इफ यू सी केयरफुली, so if you are directly writing to file in terms of bytes, we have file output string. If you are writing to a file in terms of character, we have file writer. अगर आप बीच में बफर लेते हो तो वी हैव बफर ऑल्सो, बफर का यूज करके आप कर सकते हो। यू वांट टू राइट दैट, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम यूज करते हो और बफर्ड राइटर यूज। दीज आर द क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट yesterday, और बहुत सारी एग्जांपल्स भी। We'll talk about, there is one more topic left for that, that is called as serialization and deserialization. There is a concept called as serialization and deserialization. Now what is serialization and deserialization we'll talk about, ये भी इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है। तो serialization, what is serialization? One, serialization, tell me. What is serialization? Saving a Java object in the file permanent. क्या होता है? कोई एक जावा ऑब्जेक्ट है जिसको आप परमानेंटली फाइल में स्टोर करना चाहते हो, उस बोला जाता है serialization. What is serialization? Saving a Java object or persisting Java object in the file permanent. That thing is called serialization. And what is deserialization? अभी जो आपने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था फाइल में, उसको रीड करना। What is serialization? Reading a Java object, from the file, से बोला जाता है serialization, deserialization। serialization मतलब एक जावा ऑब्जेक्ट परमानेंटली फाइल में राइट करना, और deserialization का मतलब रीडिंग अ जावा ऑब्जेक्ट which was already stored in the file, उसको रीड करना, उस प्रोसेस को deserialization. Now in order to save the object, the file object must be of type serializable. What is serializable? What is serializable? It is an marker interface. Marker interface मतलब खाली इंटरफेस, it is an empty interface. But marking का मतलब क्या होता है? If this particular object is of type serializable, इसका मतलब होता है this object can be saved in the file. अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसको आपको फाइल में स्टोर करना है परमानेंटली, अगर वो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल टाइप का नहीं है तो आप उसको सेव कर पाओगे। तो यू हैव टू कंपल्सरी मेक दैट क्लास ऑफ टाइप सीरियलाइजेबल, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। इसका मतलब होता है कि इट इज नाउ रेडी फॉर द सीरियलाइजेबल। एग्जाम्पल, अभी मार्किंग प्रोसेस क्या, तो व्हाट इज मार्किंग, आई विल एक्सप्लेन दिस। अभी जैसे कोई वोटिंग सेंटर है, बूथ है, वोटिंग बूथ है, वहाँ पर सब वोटिंग करने के बाद आपको वहाँ पर एक नाखून लगाया होता है। इसका मतलब क्या होता है? यू आर डन विद द vote, you cannot vote for once again further. So that निशान is nothing but a marking process. Why we are doing marking process? अभी मेरे पास जावा के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हजारों ऑब्जेक्ट्स होंगे, अब मुझे उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मार्क करना है विच वी कैन सेव इन द फाइल। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मार्किंग प्रोसेस। मार्किंग मतलब दिस इज समथिंग, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सेव्ड इन द पर्टिकुलर फाइल, दिस इज द मार्किंग प्रोसेस। जावा यूजेस, हम भी खुद का भी मार्किंग प्रोसेस कर सकते हैं। वी कैन आल्सो क्रिएट अ इंटरफेस एंड से दैट दिस इज अ मार्कर इंटरफेस। कैसे? तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू आई हैव टू जस्ट आई विल क्रिएट अ इंटरफेस एंड आई विल जस्ट सैलरी प्रोसेसिंग, जो भी इस पर्टिकुलर मंथ में बंदा प्रेजेंट था उसका सैलरी प्रोसेस कर।
तो ऐसा ऐसा लॉजिक डेवलप करने के लिए भी आप ये मार्कर इंटरफेस कॉन्सेप्ट, मार्किंग मतलब सिंपल है, इट इज एलिजिबल। और लेट से कोई आपने मिलिट्री का देखो, आर्मी वगैरह उनका रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पर जिनका भी सिलेक्शन होता है, उनका जो भी कोई तो मार्क देते हो, दे मार्क दैट, जैसे 1000 लोग है वहाँ पर, 1000 लोग, उसमें से कुछ लेट से 10 लोग सेलेक्ट हो गए, तो 10 लोग के हाथ कुछ तो काले करते, गोरे करते, कुछ थे, फिर नेक्स्ट राउंड के लिए दे आर रेडी। और जो भी रिजेक्ट हो गए उनके हाथ पैर कुछ तो रेड कलर में वो मार्क कर देते, तो दैट इज नथिंग मार्किंग, दैट इज फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे ही जावा क्या करता है, इट मार्क्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अभी सीरियलाइजेबल मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट आर नाउ एलिजिबल फॉर दी serialization process, these objects can be saved in the file, ये इसका मतलब होता है। Similarly to deserialization also, in order to read the object, in order to read the object also, in order to in order to save the object, जैसे सेव किया था वैसे, in order to read object from the file, object भी read करना है, तो that object must be of type serializable, what that should be। now to perform serialization, we use a class called as object input stream, there is a class name object input। similarly यहाँ पर भी to perform deserialization, class use class called as object, this is output, right, राइट कर रहे हैं आप, सीरियलाइज कर रहे हैं मतलब सेव कर रहे हो ऑब्जेक्ट आउटपुट, और यहाँ पर रीड कर रहे हो आप, तो ऑब्जेक्ट इनपुट, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट, ऑब्जेक्ट आउटपुट मतलब राइट करना, ऑब्जेक्ट इनपुट मतलब रीड करना। So let's talk about that, how to do that, how to perform serialization and deserialization, let's do that। We'll talk about this serialization process, how do we serialization. I will create a class called as student. Now what we are going to do, have some student, it will have private int student string name, so private string the name password, which was, I will generate some constructor also, this is all argument constructor, now zero parameterized constructor, now setter also, I will have two string method also, this is the thing I have,
Now I will create a test class where we will perform the serialization. How do we perform serialization? Let's do that. Now I create an object of student class, uh, some values. So ID is, let's say, 1. Okay, this is the object I have, and when the program is started, this object will be created. Later on, I want this object to, तो ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करना, तो फाइल भी आपके पास चाहिए होगा. आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल. फाइन. फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं डॉट डेटा और टी एक्स टी, दिस फाइल वी विल क्रिएट फाइल डॉट फाइल. File will be created, and later on what we need, we want to write something. तो फाइल में राइट करने के लिए आपको क्या राइट करना है, आपको बाइट्स. तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा आपको, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और उसको दे दो आप इन फाइल. लेकिन अब ये नॉर्मल फाइल तो है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट राइट करने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा फाइल आउटपुट. फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. File object is the input to file output stream, and file outputs is the input to object outputs. और finally object output stream dot write object, और उसको object दे दो आप. Finally आप ये सारे streams close कर दो. These are all of streams. We close file outputs, close say front object. If I run this, there will be one issue. What will be the issue? What will be the issue in this? Not serializable exception. If this is not the serializable, मैंने आपको बोला था कि this particular object must be of type serializable. Serializable is a marker interface. It is not having any other. What we have to do? Else we get अभी इसको बना दिया मैंने implements serializable type. रन करते हैं. Student object serialized. Let's check. File is there. Yes, file is there, and inside that you will find that the object is object entities. Right. Now I want to read the object back. I want to read the object back. उस प्रोसेस को बोला जाता है डीसीरियलाइजेशन. क्या बोला जाता है? डीसीरियलाइजेशन. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है वहां पर, ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, अभी रीड करना है. तो फाइल ऑलरेडी है वहां पर, फाइल आपको क्रिएट करना है क्या फिर से? नो. फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बस. जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल क्लास. एंड व्हाट इज द फाइल नेम? रन डॉट टी. ये फाइल था, इस फाइल के अंदर कंटेंट है. अभी मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए आपको चाहिए होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इनपुट दे दो आप फाइल. फाइल ऑलरेडी है आपके पास. You do not need to do anything. IO exception, don't worry, this thing we are going to learn in the next class, that is handling. What is this? अभी के लिए आपको समझा दूं, अगर कोई फाइल आप रीड नहीं कर पाते तो कोई एक्सेप्शन आता है, तो दैट इज वाई वी आर राइटिंग दिस. अभी के लिए भूल जाओ व्हाट इज दिस. वी आर गोइंग टू लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग सेपरेटली. फाइल इनपुट स्ट्रीम, अब मुझे ऑब्जेक्ट रीड करना है, तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और उसे इनपुट देना है फाइल इनपुट. Then using this object input stream, we have to
कॉल अ मेथड कॉल्ड एज रीड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का मिलने वाला है आपको? स्टूडेंट टाइप का, तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको। आई हैव टाइप कास्टेड दैट, और ये मिल गया आपका ऑब्जेक्ट। While reading the object, you might get one exception. What is that? Class not found exception. अगर आप ऑब्जेक्ट रीड कर रहे हो, फाइल में डेटा स्टोर्ड है लेकिन क्लास ही नहीं है आपका, what will happen? पहले आपने ऑब्जेक्ट, पहले क्लास क्रिएटेड था, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको सेव भी कर दिया। जब रीड करते टाइम क्लास ही गायब है, तो एक्सेप्शन कौन सी आएगी? क्लास नॉट फाउंड। और फाइनली आप इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हो। ये हो गया आपका स्टूडेंट। और क्लोज भी कर देना आप सारी स्ट्रीम्स को, ऑब्जेक्ट इनपुट डॉट क्लोज, फाइल आउटपुट डॉट, फाइल इनपुट डॉट। ऑब्जेक्ट को मैंने रीड किया और उस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कर, आई एम जस्ट प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट कंटेंट। आर यू एबल टू रीड द ऑब्जेक्ट फैक्ट? क्लियर ऑन दिस? क्लियर है चीजें? ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग। अभी यहाँ पर देखो, आप सारी चीजें, उसका आईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, सब कुछ आपने सेव कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज फुल सीरियलाइजेशन। व्हाट इज दैट? कंप्लीट सीरियलाइजेशन, कंप्लीट ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन वी कॉल इट। अगर आपको पार्शियल ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन करना है, ऑब्जेक्ट मतलब ये लेट से पासवर्ड मुझे सेव नहीं करना, आई डू नॉट वांट दिस पर्टिकुलर फील्ड सेव्ड, पासवर्ड फाइल में सेव नहीं करना है, आई डू नॉट वांट दिस पर्टिकुलर फील्ड टू बी सेव्ड इन द फाइल, तो तब आता है आपका एक कीवर्ड, व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट कीवर्ड। व्हाट इज दैट? ट्रांजिएंट कीवर्ड। आपको पूछा जाएगा में व्हाट इज ट्रांजिएंट? इट इज अ कीवर्ड which is used to keep the object field serialization, object field serialization, object field being serialized। का मतलब अब मेरे पास 4-5 फील्ड है, उसमें से कोई फील्ड मुझे फाइल में सेव नहीं करनी है, तो ऐसे फील्ड को आप मार्क करते हो ट्रांजिएंट। इट इज अ कीवर्ड which is used to skip the object field being serialized। I will just tell you the example, एक बार करते हैं। और जो फाइल क्रिएट होता है उसको मैं डिलीट करता हूँ, आई विल जस्ट डिलीट दैट फाइल। नाउ आई विल सीरियलाइजेशन करने से पहले मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी फील्ड आप चाहते हो कि इस फील्ड को सेव नहीं करना है, ये फील्ड मुझे सेव नहीं करनी है, उस फील्ड को आप बना देते हो ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब दिस पर्टिकुलर फील्ड विल नॉट बी सेव्ड इन द। अभी सीरियलाइजेशन करते हैं, लेट्स डू दैट। बाकी सारी फील्ड्स सेव होगी, बस आपका पासवर्ड फील्ड सेव नहीं। So that is called as partial object serialization। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सीरियलाइज, अभी उसको रीड करने का ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू रीड दैट। हियर आपका पासवर्ड फील्ड है, सीरियलाइज ही नहीं हुआ, बाकी सारी फील्ड्स सीरियलाइज होगी लेकिन ये फील्ड आपकी सीरियलाइज नहीं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांजिएंट कीवर्ड अक्षय? तो to avoid some, to skip the object field from serialization, you want to skip some fields being serialized। क्या करना है आपको? कुछ फील्ड ऐसी जिसको आपको सीरियलाइज नहीं करना है, सिंपल। You want to skip some field serialization, then we use the keyword called as transient। याद रहेगा, बहुत सारा हाइबरनेट में भी ऐसे यूज होता है बहुत ज़्यादा। अभी लेट से हाइबरनेट का ऑब्जेक्ट आप ORM यूज करके ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव करने वाले, लेकिन ऑब्जेक्ट का मुझे कोई फील्ड सेव नहीं करना है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को भी आप बना देते हो ट्रांजिएंट, so दैट पर्टिकुलर फील्ड विल नॉट बी सेव्ड इन द डेटाबेस। वहां पर भी एक कीवर्ड यूज होने वाला है, सो दैट टाइम यू शुड आल्सो रिमेंबर व्हाट इज ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर फील्ड of the object will not be saved in the file। तो सीरियलाइजेशन प्रोसेस में वो टेक पार्ट नहीं होगी, बाकी सारी फील्ड्स सेव होगी। क्लियर है?